Today we would be discussing the results of Axis Bank. एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मेरे पास ये स्टॉक है, डिस्क्लेमर दे दूं। दिस वीडियो इज नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बैंक अभी प्रेशर देख रहा है, सेलिंग प्रेशर, और बेसिकली इसका कारण हो सकता है कि स्टॉक में एफआईआई होल्डिंग्स 50% के अराउंड है। तो देखते हैं कि बैंक के रिजल्ट कैसे थे। लेट्स लुक एट द नंबर। मैंने इंपॉर्टेंट फिगर्स को हाईलाइट कर दिया है येलो से। बैंक ने इंटरेस्ट अर्न किया है 30,419 करोड़। बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था 16,936 करोड़ वर्सेस 16,612 करोड़ क्यू ऑन क्यू एंड 14,311 करोड़ वाई ओ वाई। Operating profit of the bank has increased to 10,712 crores from 10,106 crores a quarter back and 8,631 crores a year back. तो हम देख सकते हैं कि ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, और इवन क्यू ऑन क्यू टर्म्स पे भी अच्छे दिख रहे हैं रिजल्ट्स। Provisions of the bank stands at 2204 crore versus 2039 crores क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 814 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोविजंस बैंक के बढ़ गए हैं। ऑल्दो हम लेटर ऑन वीडियो में देखेंगे कि लोन लॉस प्रोविजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। Profit for the bank stands at 6,917 crore versus 6,034 crore Q on Q and 5,863 crore Y o Y। जून क्वार्टर में बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, तो ये आप कह सकते हैं कि ये लो बेस इफेक्ट भी है यहाँ पर जो दिख रहा है। CAR of the bank is well positioned at 16.61% versus 16.65% a quarter back. EPS of the bank is 22.37 versus 19.54 Q on Q and 19.03 Y o Y. Gross NPA and net NPA of the bank have reduced. Gross NPA was 1.54% a quarter back. Now stands at 1.44%, while net NPA is flat at 0.34. Return on the assets of the bank have improved to 1.84 from 1.65 a quarter back. ये बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, इनमें इनके सब्सिडरीज के भी रिजल्ट्स इंक्लूडेड हैं। हम बस एक दो फिगर देखेंगे और मूव ऑन करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक स्टैंड्स एट 11,451 करोड़ वर्सेस 10,744 करोड़ ऑन ए consolidated basis, and profit for the bank stands at 7,408 crore versus 6,450 crore Q on Q and 6,217 crore Y o Y. EPS for the current quarter is at around 24। जब हम बैंक का पीई कैलकुलेट करते हैं तो ईपीएस कंसोलिडेटेड यूज करना सही रहता है। करेंटली पीई ऑफ द बैंक स्टैंड्स एट 13.15। मेरा मानना है कि पीई प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, तो बैंक्स के लिए भी पीई देखने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। Now we look at the press release of the bank. Net interest income grew 9% YOY. Net interest margin 3.99% है। ये पहले 4.05% था, which we will see later in video. Net advances grew 11% YOY and 2% Q on Q. Retail loans में growth है 15% year on year, SME में 16% year on year. Year on year numbers अच्छे लग रहे हैं। Overall, CAR stood at 16.61%, and we will gross NPA and net NPA witnessed slight decline year on year. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 24% ईयर ऑन ईयर अप है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। एसेट क्वालिटी, नेट क्रेडिट कॉस्ट एट 0.454%, डाउन 43 bps sequentially, which is a very good sign. Gross slippage ratio declined 19 bps quarter on quarter. It now stands at 1.78%, which is an important factor. तो हम चाहते हैं कि स्लिपेज रेशियो जितना कम रहे उतना बेहतर है, उतना कम बैंक को प्रोविजंस करने पड़ेंगे। पीसीआर स्टैंड्स एट 77% ऑन एन एग्रीगेट बेसिस, कवरेज रेशियो एट 153%. For SBI, this coverage ratio is at around 150%. We had discussed that in the previous video.
when we were doing the analysis of SBI. डोमेस्टिक सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस जो कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में इंक्लूडेड रहते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं. We will not discuss it. You can have a look at it. Now we will discuss about the provisions. Provisions and contingency stood at 2204 crore, but the loan loss provisions were only 1441 crore. The bank made other provisions amounting to 520 crores, and these are entirely prudent and not for current or future NPA assets. तो बैंक के पास अब टोटल प्रोविजंस हो गए हैं 11,815 करोड़ एंड on an aggregate basis their PCR is 153% of GNPA as on 30th September 2024. Credit cost for the bank stood at 0.54%. जितना कम क्रेडिट कॉस्ट रहेगा बैंक के लिए उतना अच्छा है. The total deposits of the bank have grown 14% year on year. It is a good number. Current account deposit grew 8% year on year, and saving account deposit grew 2% year on year. Current account deposit plus saving account deposit आपको दे देता है CASA ratio. These are low interest rate deposit, and it helps banks to generate high net interest margin. Total term deposit grew 21% year on year and 4% quarter on quarter. CASA of the bank stands at 41%. बैंक के एडवांसेस 11% ईयर ऑन ईयर एंड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रो किए हैं. Net worth of the bank now stands at 1,64,000 crores. Book value of the bank stands at 532 rupees. तो अगर कोई आपको कहे प्राइस टू बुक कैलकुलेट करने तो सीधे आप 1160 डिवाइडेड बाय 532 कर सकते हैं which comes out to be 2.18. So India's third largest private sector bank is trading at a price to book of 2.18. Shows reasonable valuation. Gross NPA at 1.44%, net NPA at 0.34%. Recoveries were 984 crore in the current quarter, and reported net slippages were 1390 crore. And this figure is an improved figure as compared to last quarter. Gross slippages during the quarter were 4,400 crore compared to 4,800 crore in Q1 FY25 and 3,254 crore in Q2 FY24. Although ये gross slippages ज़्यादा थे, but recoveries and upgrades भी अच्छे खासे हुए थे, जिसके कारण net slippages 1390 करोड़ पर ही थे. बैंक ने इस क्वार्टर राइट ऑफ भी किया है 3,119 करोड़ का. राइट ऑफ करने से ग्रॉस एनपीए में डिक्रीमेंट होता है और बैंक के प्रोविजंस कंज्यूम होते हैं. बैंक हैज एडेड 150 ब्रांचेस ड्यूरिंग द क्वार्टर. ओवरऑल अब बैंक के पास 5,577 डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं. बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ROE at 18.08%, NIMs at 3.99%, operating profit margin at 2.86%. Third largest private sector bank with 52 million customers and above 1 lakh employees. Key metrics for quarter 2 FY25. Again, deposit growth at 14% year on year, advances growth at 11% year on year, retail को 60% loan देते हैं, which is a good thing, corporate 29% and SME 11%. Profit has grown 15% quarter on quarter due to low base effect and 18% year on year. Operating profit has grown 6% quarter on quarter and 24% year on year. In this page, we can see that the operating profit and core operating profit, how they have performed in the September quarter of the last 5 years. Cost of funds for the bank, the cost of funds for the bank have been in a rising trend for the past 2 years. It now stands at 5.45%. NIMs of the banks have declined to 3.99%. Overall NIMs, it was 4.11% a year back. We can see the decrement from 4.05% in June quarter. Now it is at 3.99%. These are the bifurcation of the retail loan book. So we can see that 1 million plus cards were issued for 11th consecutive quarter. Around 1.06 million cards were issued in September quarter. Trend in credit card spends market share.
So bank accounts for 10.7% of overall spends in credit card. Overall FY25 Q2 spends were at 61,119 crores, which were 6% up quarter on quarter and 13% up year on year. डेबिट कार्ड में स्पेंडिंग घट रही है, इसका एक पॉसिबल कारण यूपीआई भी हो सकता है. Asset quality, slippages of the bank increased in Q1 FY25 but declined in Q2 FY25. The net slippages stand at 0.96%. We would like this number to go down further. Net credit cost of the bank is at 0.54%. When banks refer to credit costs, they are talking about the amount they expect to lose because of standard credit risks. In case of home loans, the credit costs are the lowest, while in case of credit cards, the credit cost is more. So, for instance, say if the cost of funds for a bank is 7% and the bank wants to earn a spread of 2% and there are credit costs of 1%, so the bank will have to price the loans at minimum 10%. So, cost of funds 7% होंगे, बैंक को 2% का स्प्रेड चाहिए और 1% बैंक अज्यूम करके चल रहा है क्रेडिट कॉस्ट, तो बैंक को लोन 10% पे देने पड़ेंगे. Overall credit costs of the bank have decreased in the past few years, which is a good sign for the bank. Now, let's have a detailed walk of NPAs over recent quarters. Gross NPA opening balance. So, we will first look at the opening balance for Q2 FY25. 16,211 crores पे ये थे. फ्रेश स्लिपेजेस हुए 4,400 crores. अपग्रेडेशंस हुए 2,069 crores और राइट ऑफ हुए 3,119 crore. तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें फ्रेश स्लिपेजेस माइनस अपग्रेडेशंस माइनस राइट ऑफ्स को इंक्लूड करना होगा. वो हमें ग्रॉस एनपीए का क्लोजिंग बैलेंस दे देगा. नेट एनपीए ऑफ द बैंक इज एट 3,612 crores. जब बैंक में राइट ऑफ होता है 3,119 करोड़ का राइट ऑफ हुआ, तो ये डिक्रीमेंट हो जाते हैं बैंक के प्रोविजंस से. Provisions. See, this was the figure which I was talking about earlier. Q1 FY25 में ये बहुत ज़्यादा थे. 2,551 करोड़. Q2 FY25 में ये स्टेबलाइज हुए और 1440 करोड़ पे आए हैं. Although bank had made other provisions of 763. But my primary focus is always key loan loss provisions should be less. It was a worrying sign in the uh, June quarter. And you could see that reflection after the quarterly results also in both the June and September quarters. बैंक का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूशंस एट 31.7%, फॉरेन इन्वेस्टर्स एट अराउंड 50%. Book value per share is 532 rupees. Diluted EPS is 88.2 rupees. Market cap of the bank is 3,56,951 crore as of October 15, 2024. So this was all we had in store for you. आप हमें बताएं कि आप कौन सा शेयर चाहेंगे कि हम फर्दर डिस्कस करें और उसका एनालिसिस करें. इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.